अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं डोज के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और हमारे साथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डोसेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिफिनीशन ऑफ डोज पे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, डोज इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स which produces the observable biological effects in a particular organ or body is known as drug। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर हमारे पास एक ड्रग है और इसको हम if it is given in a very small dose, it is ineffective to produce the desired pharmacological effect. But if we give the drug in a very large amount or larger dose, then it may produces the toxic effect. So the dosing of drug is important. Similarly, the action produced by the drugs are also altered by the change in the dose of drug. Like suppose we have the rezapine, which is a centrally acting drug. If it is given in low concentration, it is antihypertensive. But if it is given in larger concentration, it produces the tranquilizer effect. Similarly, we have the aspirin. If we change the concentration of aspirin, like in low dose, it has antiplatelet effect. But if it is given in higher concentration, it produces anti-inflammatory effect. अब आ जाते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे साथ आता है मिनिमल डोज। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ड्रग विच जस्ट प्रोड्यूसेस द ऑब्जर्वेबल फार्माकोलॉजिकल चेंज, इट इज़ मिनिमल डोज। सेकंड टाइप है हमारे साथ थेरापेटिक डोज। तो थेरापेटिक डोज को हम इफेक्टिव डोज भी कहते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग, इट इज़ अमाउंट ऑफ डोज दैट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है ई डिपेप्टिव। ई डिपेप्टिव स्टैंड फॉर द मीडियन इफेक्टिव डोज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन अबाउट 50% ऑफ द टेस्टेड इंडिविजुअल्स। और थेरापेटिक डोज के हमारे साथ फिर टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स आ जाते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला है मेंटेनेंस डोज और दूसरा है लोडिंग डोज। तो मेंटेनेंस डोज को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ डोज that maintain the steady state of drug in the plasma. The amount of drug in the plasma remain constant. If the rate of drug administration is equal to the rate of drug clearance from the plasma and the amount of concentration and the amount of the concentration of drug in the plasma will remain or maintain the same। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ आ जाता है लोडिंग डोज। सो लोडिंग डोज को हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ गिवन इन इनिशियली हायर कंसंट्रेशन टू अचीव द डिजायर्ड therapeutic effect quickly, like we give the loading dose of quinidine and malaria। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ आ जाता है मिनिमल टॉलरेटेड डोज। तो मिनिमल टॉलरेटेड डोज जो है ना, ये हमारे साथ है द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट does not completely relieve the symptoms, but if it is given in higher dose, it produces the toxic effects। मिनिमल टॉलरेटेड ड्रग डोसेज जो है ना, ये हमारे साथ जो एड्रेनोकॉर्टिकल ड्रग्स है उसके लिए होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज है। तो मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग that a patient can bear or tolerate without causing the unwanted effects। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ लीथल डोज आता है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग विच proves to be lethal to the tested individual। LD50 stand for the median lethal dose। It is the amount of drug that causes a death in about 50% of the tested individual। It is median lethal dose। इसके बाद हमारे साथ बूस्टर डोज आता है। तो बूस्टर डोज जो है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ स्मॉलर देन द इनिशियल डोज and it is used for the induction of the active immunity। ठीक है, लाइक हम बूस्टर डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं, इसी तरह हम टेटनस वैक्सीन का भी बूस्टर डोज देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ आता है पेटल डोज। तो पेटल डोज इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज केपेबल ऑफ काजिंग डेथ एंड इट इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ डिवाइडेड डोज आते हैं। तो डिवाइडेड डोज इट इज़ the fraction of the total amount of drug that is prescribed to be given at a specific interval during 24-hour period। Divided dose जो है ना, ये हमारे साथ fraction of the एक fraction है upon the total drug, जो कि हम after specific time interval जो है ना हम देते हैं। ठीक है, लाइक हमारे साथ है BD stand for 2 times a day हम एक ड्रग देते हैं, या TD stand for 3 times a day या 4 times a day। ठीक है,
पीडियाट्रिक डोसेज जो है ना, ये हमारे साथ डोज दैट इज डोज ऑफ द ड्रग दैट इज रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रंस। तो पीडियाट्रिक डोज की कैलकुलेशन के लिए पे हमारे साथ डिफरेंट फार्मूलाज है, लाइक क्लार्क फार्मूला है, डाइलिंग फार्मूला है, यंग्स फार्मूला भी है। So Clark formula is equal to the adult dose multiplied by the weight in pound divided by 150। हमारे साथ डाइलिंग फार्मूला है, तो इसको हम डाइलिंग फार्मूला इज इक्वल टू एडल्ट डोज मल्टीप्लाई बाय द एज एंड ईयर डिवाइडेड बाय 20। अब हम हमारे साथ जो ड्रग है इसके के जो डोजिंग रेट है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू द क्लियरेंस ऑफ ड्रग फ्रॉम द प्लाज्मा मल्टीप्लाई बाय द डिजायर concentration of drug in the plasma divided by the bioavailability। अब हम आखिर में आ जाते हैं ड्रग डोसेज फॉर्म में, कि हमारे साथ जो है ना ड्रग जो है कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। तो सबसे पहले ओरल रूट। ओरल रूट ये हमारे साथ सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। सॉलिड फॉर्म में ये दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, कैप्सूल, फेल्स। और लिक्विड फॉर्म में हमारे साथ ये अवेलेबल है इन सिरप फॉर्म, मिक्सचर फॉर्म, एमल्जन फॉर्म, सस्पेंशन फॉर्म। फिर इसके बाद हमारे साथ पेरेंटल रूट है। तो पेरेंटल रूट के जो डोसेज फॉर्म्स है वो है इन दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस एंड इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन। फिर हमारे साथ इनहेलेशनल रूट है। तो दिस रूट वी कैन गिव द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। फिर टॉपिकल यूज़ के लिए ड्रग्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स, in the form of lotions, in the form of nasal preparation or ophthalmic solution। फिर हमारे साथ आखिर में आ जाता है डोसेज पंप होता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक। तो दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ enemas, in the form of suppositories and in the form of dosage।